सीएसएस में फेलियर से बचना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? ऑफ कोर्स सारे वो टॉपिक्स करके जो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस पूरा इग्नोर कर देना है। बाकी सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस अपना रखना है, उनको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलिए आपको आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ जो 2024 के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने किए हुए हैं तो वेल एंड गुड, एक रिवीजन हो जाएगी। नहीं किए तो स्टिल आपके पास तकरीबन 10 दिन हैं, तो उनमें आप कर सकते हैं। So, there is supercomputers, fiber optic communication, ChatGPT and generative AI, application of GIS, black hole, science behind cyclones, cholesterol and risk associated with high cholesterol, then renewable and non-renewable sources of energy. Then there is importance of forest in the economy of a country, green hydrogen, biotechnology, antimicrobial resistance, pesticides, fertilizers and disadvantages, vaccination and different types of vaccines, disaster management cycle, then respiratory system of human body, biofuels, smog, solid waste management, natural and artificial radioactivity, dark energy and dark matter, lunar eclipse, differentiate between tornadoes and cyclones. Then there is droughts and their impacts, causes and effects of floods, El Nino and La Nina effects, factors responsible for environmental pollution, water lodging and salinity, significance of vitamins, and impacts of rotation and revolution of earth. फाइन, सो इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें और स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर का बताती हूँ।